Is the exposure to real life, rural life, and the plights of the peasant. এইটার মধ্যে করতে করতে he earned some name and fame. ভারতবর্ষের কৃষক যতবার লড়াই করেছে হাতে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেছে, জমিদারের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। চরমোদা তার প্রত্যেকটা লেখাতে বলছে এগেন্স্ট মিলিটারিজম, যে পলিটিক্স মাস্ট বি ইন কমান্ড, নট গান। যে বন্দুকটা যে ধরছে তার পেছনে একটা রাজনীতি তাকে পরিচালনা করবে, আদারওয়াইজ যেটা মাওয়িস্টদের ক্ষেত্রে এখন ঘটে গেছে অনেকটা ডিস্টরশন, উল্টোটা ঘটে গেছে, এই গানটা কমান্ড করেছে। যে ফসল করবে তখন ফসল হয়ে গেলে ওই জোরদারের গলায় তুলে দিতে হয় সম্পূর্ণ দাম। কোন পার্টি নেতারও তো কিছু কিছু নেতা হচ্ছে যে না আপনার নীতিটা ঠিক নেই, আমার নীতিটা ভালো। আমার মা তিনি নিজে তেভাগা আন্দোলনের সময় থেকে তিনি লড়াই করেছেন, এবং যখন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি তৈরি হয় সেই আত্মরক্ষা সমিতিতে তিনি লিডারশিপ দিয়েছেন। কিন্তু মা 52 পরে আমার দিদির জন্ম হয় 1954-এ, তারপরে 56-এ আমার মেজদি এবং 60-তে আমি, পরপর 3টে সন্তান, এবং তার এই যে পরিবারটাকে চালানো, সব দায়ভার নেওয়া, অসুস্থ শ্বশুরের সেবা করা, এইসব করেও কিন্তু কামিজবাড়ি করেছেন, এবং বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে তিনি পাহাড়ে সংগঠন করতে গেছেন, চা বাগানের সংগঠন করতে গেছেন। তার স্বামীর পলিটিক্স বা নকশালবাড়ি পলিটিক্সের উপর তার যে ভরসা ছিল, তার যে আস্থা ছিল, সেই জন্যই আমরা এত বছর পরে মাই মাদার সার্ভাইভড টিল 1995। কোনোদিন আমার মা বলেননি যে তোদের বাবার জন্য আমাকে রাজনীতি ছেড়ে দিতে হয়েছিল, তোদের জন্য মানুষ করতে গিয়ে আমার রাজনীতি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। Le gouverneur a fermé l'université. On nous demande de manifester. Mais cette marche des étudiants est dirigée par les opportunistes du Front populaire. Ce sont eux qui ont mis en prison les leaders paysans de Naxalbari. Tout ça ne nous concerne pas. C'est de la politique bourgeoise et révisionniste. Nous voulons faire la révolution avec les paysans, en dehors de la démocratie bourgeoise, par la lutte armée. Suivons l'exemple de la révolution chinoise et du peuple vietnamien. Les manifestants descendent vers le palais du gouverneur. Ils sont peu nombreux et divisés. Socialistes de diverses tendances, communistes de gauche et de droite, extrémistes pro-chinois fractionnés en petits groupes, les étudiants traversent la ville en ordre dispersé. 10 000 policiers et soldats les attendent.
milieu de l'après-midi, la manifestation est traversée perpendiculairement par un cortège religieux. Les fidèles célèbrent l'anniversaire de la mort d'un certain Rabbi Das, fondateur d'une secte syncrétiste qui regroupe des hindous de basse caste, des intouchables, des sikhs et des musulmans. La manifestation reprendra aussitôt après. ये 207 घर है, जल गया बुरी तरह से। रास्ता दिखाने मतीस को ले जाएंगे बोल के बोला तो मतीस को मार दिए। ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। When I think of India, I think of an emerging power. A country of new billionaires. The planet's largest democracy. What I don't think of is the India that is a war zone. A 40-year-long civil war has been raging in the jungles of central and eastern India. And trapped in it are the poorest of the poor. India's very own aboriginals, the Adivasis. I've come 1,400 kilometers from India's capital, New Delhi,
far from the country's bustling cities and tourist trails, into these jungles to meet the Adivasis. An uprising by Maoist fighters and its brutal suppression by the Indian government has claimed more than 10,000 lives since 1980 and displaced millions of Adivasis. एक साइडे पहाड़ पाटी आछे एक साइडे पुलिस गुला आछे आमी माझे माझे रही गेली. Displaced and destitute in India's tribal heartlands that span almost the whole country, millions of India's aboriginals are caught in a deadly crossfire. An ancient way of life. The Adivasis are believed to be India's earliest inhabitants. A loose collection of tribes, roughly 84 million of these indigenous people, about 8% of the country's population. The pristine beauty of these jungles has been home to the Adivasis for centuries. They not only rely on the lush forest for sustenance, it also nourishes their spirits. They are at one with this land. For generations, Kandul Diori's family has lived in the village of Kandadar in the eastern Indian state of Orissa, surviving off subsistence farming and what the jungle provides. बापरो बडू अजा कते कते पाछो काठपत्र फड़मूड़ चार केंदू जंगलर कंदा सब हेटा मेडुसी. In fact, the entire village of Kandadar can make the same claim as Kandul Diori. Everyone here even has the same last name. And this is all they have ever known. But it's a way of life increasingly under threat. For the last 40 years, the Adivasis have become victims of the very land that once sustained them. Mineral deposits estimated to be worth trillions of dollars lie beneath this soil, and the Indian government wants to cash in. Forests have been cleared and dug up for iron ore, manganese, bauxite, and a number of other minerals. And the government evacuated hundreds of villages to make room for steel plants and mineral refineries. This is the Rourkela steel plant. It was built in 1955 as a symbol of a newly independent India's self-reliance. It produces almost 2 million tons of steel a year. 32 Adivasi villages were demolished to make room for the plant. I visited some of the people from those villages who ended up in the settlement camp nearly 60 years ago. They were all promised jobs and prosperity, but they say they have been given nothing. Soma Lakta was a child when he came here. His son was born and raised in this camp and is now in his 20s. Wary of outsiders, Lakta is hesitant to complain. He would much rather say that things are just fine. As an Aboriginal person, as an Adivasi in India, do you feel different to the rest of the citizens of India? हाँ सबसे अच्छा व्यवहार है हम लोग सबसे अच्छा व्यवहार कहाँ स्कूल या एडमिशन या जो भी बने कुछ सरकारी कुछ भी काम में जाने से कैसे ऑफिस में जाने से कुछ तहसील उसील ऑफिस में रहो तुम्हें टिकट दे रहे नहीं खोरी जैसे समाज का जैसे बाहरी आदमी जैसे आदिवासी को कैसे देखता वही सबसे पिताजी थोड़ा वाला स्टेटमेंट अच्छा नहीं दिए.
कोई भी स्कूल या कुछ में भी माने ज़्यादा वहाँ आदिवासी छोड़ के अदर कास्ट का रहने से फिर भी हम लोग को आदिवासी बोल के थोड़ा नीचे नज़र से देखता, कभी भी अपना लेवल की हाँ चलो कि भाई भाई की इससे वो इससे नज़र से कोई नहीं देखता. Upon hearing his son's angry words, Lakhdar musters up the courage to speak up about how his people are really treated here. हुआ नहीं है. हम लोग को ऑब्जेक्शन करने से उन लोग लाठी ठेंगा करता है, मारपीट करता है, तो हम लोग क्या करेगा, क्या कहाँ खाएगा, क्या चीज़ में खाएगा, कमाएगा, खाएगा, नौकरी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, तो हम लोग भूखा रहेगा, भूखा में मरना पड़ेगा. इसीलिए हम लोग लड़ाई लगेगा और क्या करेगा, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है. When it comes to fighting for the rights of Adivasis, Dr. Binayak Sen has been a thorn in the side of the Indian government for the last 5 years. The 61-year-old pediatrician has been arrested numerous times. He remains relentless in his criticism. So these focused processes of expropriation are forcing these people who are already living on the brink of starvation off the land and into even more severe poverty. And I would submit that the condition that is being created today in large sections of the population, particularly those sections which are living in the forested areas, which are also mineral rich, the conditions that are being created correspond to a genocidal situation. So the Indian nation needs to be very careful at this juncture in its history not to expose itself to the charge that they are committing genocide on the sections of their own population. The risk of losing everything they've ever known in the government's land grab made many Adivasis fertile recruits for India's Maoist rebels, or Naxalites, who also call these forests home. The Maoists began their battle against the Indian government nearly 50 years ago and are thought to number as many as 20,000 armed men and women. They are a loose collection of anti-government communist groups that initially fought for land reform. But over time, their focus expanded to include more fundamental questions of how India is actually governed. এই ভারতে একটা গণতান্ত্রিক সরকার আছে, একটা স্বাধীন সরকার আছে বলেন, আমরা বলি যে না তা নেই। এই দুইয়ের মধ্যে একটা কন্ট্রাডিকশন আছে। তো আপনারা বলেন যে 15 আগস্ট একটা ভারত স্বাধীন হয়ে গেছে, আর আমরা বলি যে না, দেশটা পাওয়ার ট্রান্সফার হয়েছে সেমি ফিউডাল সেমি কলোনিয়াল, সেই বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ, দেশি প্রমোদশুদ্ধি পুঁজি এবং জমিনদাররাই লুটে খাচ্ছে। বা আপনারা এটাও বোধহয় জানেন যে পুলিশ আইন এখন যেটা চলে আমাদের উপর লাগু আছে, যেটা এটা 1858 সম্ভবত রানী ভিক্টোরিয়ার তৈরি সেই পুলিশ আইন। তাহলে পাল্টালোটা কি? পাল্টালো পার্লামেন্টে বসার কিছু মুখ, অর্থাৎ বোতলের ছিপি পাল্টালো, মালপত্র কিছুই পাল্টালো। তো মানুষ সেই শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত আছে। এই ক্ষুধার্ত মানুষ তো বারে বারে জাগবেই। Like all revolutionary movements, the Maoists see themselves as fighting for the greater good of the people. We've obtained a never-before-seen interview with the elusive Maoist leader Kishanji. He won't show his face on camera for fear of being identified. Kishanji insisted that his struggle is for India's rural poor. हम लोग बोलते हैं कि खेतिहारी क्रांति, अग्रेरियन रेवोल्यूशन, जोतने वालों को जमीन ना मिल, गरीब किसानों का जीवन परिवर्तन है। जल, जंगल, जमीन ये तमाम पर उसका क्षमता नहीं होकर उसका जीवन में सिर्फ उन्नयन के लिए कुछ 200 करोड़ मना बरत करेंगे, सैंक्शन करेंगे, 100,000 करेंगे, ना तो 5,000 कर देंगे, इसे कुछ नहीं होता। सही विपक्ष हम लोग, इसलिए तमाम मिलकर हम लोग पर आक्रमण करते। श्रेणी वर्ग दृष्टि में ये सभी एक है। एसेंस, इन एसेंस all the political parties will serve the state. We want to destroy the state. Then naturally what will happen? State will try to capture it, to continue its power. We want to destroy it. यहाँ असली जंग है। For 5 decades, Kishanji's fighters have recruited hundreds of disillusioned young Adivasi men and women.
Their ideal of a just society without hierarchy seemed to be the antidote to the Indian government's land grab. But the Aboriginals soon found out that their new allies have a very dark side. When it comes to enforcing their ideals in the communities under their control, the Maoists are iron-fisted. In 2009, the same year as Kishanji sat down for his rare interview, his fighters chased all the inhabitants out of 5 villages because the Adivasis from those villages refused to work for them. माओवादी साहब बोले कि यदि तुम लोग हम लोग का बात नहीं मानोगे तो 3 रोज के बाद तुम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा, घर दरवाजा जमी बाड़ी सब छोड़ के भागना पड़ेगा, ऐसा बोल करके हम लोग को धमक दिया है। अपना ये बकरी बैल सब बंधा हुआ है, घर में है, धान दौलत संपत्ति सब कौन खरियाने में है, खेती होती सभी बड़ा है, फिर हमें यहाँ चले आए, कौन देखेगा घर में? अपना जान को देखेंगे ना, अपना संपत्ति को देखेंगे। In their zeal for undermining the Indian government, Maoist fighters have torched construction equipment, bombed government schools, and derailed passenger trains, killing hundreds. Here, a Maoist court delivers its punishment to these 2 men convicted of selling and drinking alcohol, something that Maoists see as antisocial behavior, a threat to their view of an ideal society. ওইটা তাহলে তো ইয়ে করতে হবে, এটা আবার অফিসে ছেড়ে কি চলে এটা বিচার সভা টাকা হচ্ছে তোমরা আমরা আগে ঘোষণা করে কিছু করো না, জনসংখ্যাটা হাত করবে না, ঘোষণা আছে মত করেন কেন কার ঘর পেয়েছে ও কার ঘর পেয়েছে ওকে জানাও, ওকে জিজ্ঞেস করে কার ঘর পেয়েছে মত। হ্যাঁ হাড়া কে যে কালকে সন্ধ্যাবেলা ওটার মধ্যে করতে কেন আসছিল? তুই এখনো বলবি না বলবি? The Maoists are vigilant about traitors in their midst. Those even suspected of collaborating with the Indian government are brutally executed. During my visit, I tried repeatedly to meet the Maoists and ask them why they would terrorize the very people they claim to be fighting for. Over and over again, my request for a meeting was denied, citing security concerns. At one point, in a scarcely veiled threat, I was even told that they couldn't guarantee my safety. So I came to Calcutta and caught up with Oshim Chatterjee, one of the original members of the Maoist or Naxalite movement when it began back in the late 1960s. He left the Naxalites not long after, but today he mediates between them and the Indian government. A stroke has distorted Chatterjee's appearance and left him with a speech impediment. He has become one of the Maoists' harshest critics. They are killing poor Adivasis. They judge them in their court. They are the judges, they are the pleaders, and they are the executioner, and kill them there and there. Whatever violence is being perpetuated right now by those who call themselves Naxals, Naxalites, whether it's killing suspected defectors, informers, blowing up police stations and the like, would you describe that as terrorism? Without taking up the responsibility of developing class struggle, if you launch armed struggle,
it will inevitably become terrorism. It degenerated into a terroristic campaign. I have given it a name. It's an exercise of social terrorism. Socialism in words and terrorism in deeds. The village of Dianmari is one place where that terrorism has made its presence felt. If there's a word to describe the atmosphere here, it's fear. It is the quietest place I've been to in India. I've come here to meet Sakri Bandra, who was almost beaten to death by Maoist fighters because they suspected him of treason. Sakriji, tell us what happened to your family. बोला নাই কোয়া নাই এইসা এইগুলালে ধরে করে নিয়ে গেল ও দাদা থাকে ওইদিকে আমি থাকে এইদিকে ওয়াকে আগে নিয়ে গেল ওইদিনে বাঁধি রেখেছিল আর পরে আমাকে নিয়ে গেল আমাকেও নিয়ে গেল আমাকেও বাঁধিছিল এখন থোড়ি দাগিগুলো আছে 3 লোকে মারেছিল আমাকে তো আমি বাঁচি গেলি ওয়াকে মরা নিয়ে দিল The Maoists were upset that you were mentioning to people that you were giving them food, perhaps shelter. Was that true? তো আগে দেখা হয়তো জল তল দেই তো আমি ওইসব আমরা দুবাই ওমন কাম করার লোক নাই আমার ভাই তো বাগাল কারি বাইল গরু বাগাল ছাগল বাগাল ওই বাগাল করতো ও কোনো ওইসব জানে নাই বিষ আছে কি চারানা পয়সা এমন নাই Bandra and his brothers were accused of trying to poison the Maoists when some of the fighters fell ill after eating food from the village. Bandra tells me the Maoists destroyed part of his house as they left, and that he spent 2 days in a coma. His other brother looks on as we talk, but refuses to say much. He's far too afraid of what the Maoists might do to him. Have the Maoists ever explained to you why they fight against the police? ওটা আমি নাই বলতে পারবো কিসের সঙ্গে ওরা পুলিশ ওরাকে খুঁজে বলে আর ওরা হাই ওরাকে খুঁজে বলে কিসের নিয়ে যে খুঁজাখুঁজি হয় ঝগড়া করে ওটা আমাদের নিয়ে নাই করে ওই ওরাই খুঁজাখুঁজি হয় The Maoists say that they are fighting for you, that they are fighting for all the people that live in India who are like you, who are neglected by the government. They represent you and they want to empower and strengthen you. ওরা যুদ্ধ করছে আমাদের ওদের সঙ্গে কারো সঙ্গে বিরোধী নাই ও পুলিশের সঙ্গেও নাই মাওবাদের সঙ্গেও বিরোধী নাই আমরা খাটি কাছি কাঠ কোথায় বিকলি 1-2 বুঝা মুখ ভান্ডারের লে কাই 50 টাকা 100 টাকা হইলো চাউল কিনলি খালি ও চাকরি পাকরি নাই ওদের নেতার রকম আমার ওমন লোক নাই ওদের ওই দিকেও নেতা থাকবে ওই দিকেও নেতা থাকবে ওমন লোক নাই But the Maoists are not the only ones who bring death and destruction to the Adivasis. Deep in India's eastern jungles, the village of Tadmetla is in ashes. It was raided by Indian government paramilitaries when 76 of them were ambushed and killed by Maoists in the area. The Maoists were long gone, but the people of the village bore the brunt of the paramilitaries' anger. कोया कमांडो एसपीओ और सीआरपी लोग आके गांव को चारों ओर घेर के यहाँ के जो महिलाएं जो उनके हाथों में मिले उनको बुरी तरह से पिटाई की है और पिटाई करके उनको जमा करके को दूसरे उनको आगे ले गए और बाद में पीछे उन लोग बाकी लोग आग लगाना चालू किए गांव को हमको खबर मिला कि ऐसे कोया कमांडो एसपीओ सीआरपीएफ आके यहाँ आग लगा रहे हैं
और पता चल गया तो हम गांव से निकल गए हैं बाहर। उसके बाद 2 घंटे के बाद आके देखते हैं तो पूरा गांव जल चुका था। यहाँ छोटे बड़े मकान मिला के 207 घर है, जल गया पूरी तरह से। The Indian government says it's fighting the Maoists in order to protect the Adivasis from their violence and exploitation. But in this village, the government's protection takes on a whole new sinister meaning. Almost all of Tadmetla has been destroyed, and its people have now decided who they support. It was an easy choice. एक घटना के बाद हमारे लिए माओवादियों ने बहुत कुछ मदद दिए हैं और कुछ पैसे दिए हैं और चावल भी दिए हैं और कुछ बेचने वाले भी हैं हमारे लोगों के सहयोग के लिए। हम नहीं लेंगे, हमारे लोगों को ले गए और उल्टा वही सरकार हमारे मकानों को आग लगाने बोली और वही सरकार हमको कुछ देना चाहती है। ये तो गलत है। हम सरकार पर कैसे विश्वास करेंगे कि हमारे लिए एक अच्छी सरकार है। In the 40-year-long push and pull between the rebels and the Indian governments, it's clear to me that the biggest losers in this armed struggle are India's 84 million Aboriginals.